Good afternoon, all of you. Welcome at 24/7 Odia. तो आज आमर टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज 2 एग्जाम बूस्टर 2 क्लास 2 जो आम आउ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन करवा कवर अप करवा एवं ट्राए करवा बहुत गुड़ाए जिनस जानापी एंड ये समस्ते कला बेले कह मैम क्वेश्चंस बहुत इजी अच्छी बहुत सहज अच्छी बहुत इफेक्टिव किसी भी जहाँ को जहाँ इच्छा है से कमेंट मिलूँ मु सर्वप्रथमे कही रखा चाहे क्वेश्चंस मोर पूरा बेसिक रु हाई लेवल रहिबो जेहेतु आम क्लास स्टार्ट करूचे एबे ऑब्वियसली तुम मानक पई बेसिक्स ही रहिबो देन धीरे 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 तुम मानकर कौन हबो हार्ड लेवल जाए तुमर रहिबो तो सही हिसाब रे तुम माने कहीं भी व्यस्त हवा दरकार नहीं धीरे धीरे तुमर सब किछि कवर क्लियर हबो निहत भाव में सोनाली तुम्हें आरथरक भी कही मु माइंड रे रखी वीडियो आनिया पई एजुकेशन किसी वीडियो एबे तो रिसेंटली एग्जाम जाइए तुम एग्जाम भितर निहत भाव में आम वीडियो आनिबा समस्ते टिके जॉइन हो जाओ पिला माने आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय क्लास ठीक अच्छे तो आम आज किसी सिंपल क्वेश्चन करवा से किसी क्रिटिक अच्छी तो तुम्हें सब जिनस को पॉजिटिव पॉजिटिव वे ही नियो तो आज फर्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज टू तो आमर टीचिंग एंड लर्निंग सिलेबस रे अच्छी तो लर्निंग रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन ना मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट्स ना मेमोराइज करवा ना ट्रांसफर नॉलेज आम नॉलेज को ट्रांसफर करवा गिव असाइनमेंट रेगुलरली ना असाइनमेंट रेगुलरली दबा ओके ना डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एवं पिला मानक भितर आम क्रिटिकल थिंकिंग एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करवा कोटा होची गोटे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग पेड बैच रे बहुत जल्दी स्वर्णा राणी क्लासेस हबो गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ राजेंद्र समस्ते टिके सेशन टी को समस्त को शेयर कर दियो सो दैट समस्ते सेशन ने जॉइन हो पारिबे एंड क्लास टी भलो भाबरे हेई पारिबो यस एब्सोल्युटली ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर एठी पछेरी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज टू से कहला मेक लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट मेमोराइज तो हबनी ट्रांसफर नॉलेज ओनली ट्रांसफर नॉलेज सेटा तो हबनी असाइनमेंट रेगुलरली केवल दे देले सेथिरे लर्निंग हबनी बट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीन लर्निंग मीन्स कौन ना लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ए सोशली डिजायरेबल वे लर्निंग इज रिलेटिवली आहुरी मध्ये लर्निंग रा हमर अछि डेफिनेशन कौन ना लर्निंग is relatively permanent change in behavior तो ये जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर कौन पाई होची ना मे बी ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग आइदर एक्सपीरियंस हो किंबा प्रैक्टिस हो किंबा ट्रेनिंग हो ये सब जिनस द्वारा कौन होता है ना हमर लर्निंग टा डेवलप होता है ओके तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज जदि लर्निंग रा डेफिनेशन आमे कहबा को जिबा लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जोटा कि हमर प्राय टाइम पई गोटे लंगर पीरियड पई हमर बिहेवियर रे चेंजेस आनी थाए ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ओके तो ये जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर मीन्स व्हाट ए परमानेंट चेंज टा नेगेटिव या पॉजिटिव तो जदि केबे क्वेश्चन आसे ना लर्निंग बोथ कौन ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव केबे भी लर्निंग केवल गोटे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रे जाए नहीं किंबा लर्निंग गोटे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रे जाए नहीं ओके तो से जिनसटा लर्निंग होची कौन बोथ एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आमे सोसाइटी रु आम एनवायरनमेंट रु आम एक्सपीरियंस रु आमर प्रैक्टिस रु आम ट्रेनिंग रु आमे जहाँ शिखु तार गोटे पॉजिटिव साइड अच्छी आ तार गोटे नेगेटिव साइड मध्य अच्छी देन आसला एठी कौन ना आमर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मध्य गोटे पिलाए अच्छी कौन ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो अच्छी सेटा कौन ना गोटे पॉजिटिव ट्रांसफर गोटे नेगेटिव ट्रांसफर आ गोटे कौन जीरो ट्रांसफर तीन प्रकार आम लर्निंग टा
छुआ मानक पाखकू सिचुएशन अनुजाई सिंगल इंडिविजुअल मानक पाखकू विभिन्न वे रे ट्रांसफर होता है नॉलेज। तो केमिति ना गोटे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, गोटे है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आउ गोटे होची जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो सही सब गुड़ाक आम बुझा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन जीरो ना पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स फॉर सपोज एटा गोटे सिचुएशन मु ए सिचुएशन रे किछि लर्न करूछि ताहा पॉजिटिवली मोर आउ गोटे सिचुएशन रे कोन कला ना ग्रेट वे रे इफेक्ट पकेला आ सेटा मते हेल्पफुल कला मोर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट नॉलेज को आउ गोटे कॉन्टेक्स्ट रे मु यूटिलाइज केमिति करिबी। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव काहे ना मो नॉलेज ता पॉजिटिवली मते हेल्पफुल हैला आउ गोटे सिचुएशन ने। देन इसला कोन ना नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग माने गोटे सिचुएशन लर्निंग जोटा मते नेगेटिवली अफेक्ट करूची कोन ना आउ गोटे सिचुएशन ने डिस्टर्ब क्रिएट करूची कंफ्यूजन क्रिएट करूची किंबा हमर सदमा जो हमें कहूचे किंबा माइंड रे डिस्टर्बेंस ए सब जिंस क्लियर करूची। ओके तापर असला जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर मींस फॉर सपोज मु ए सिचुएशन ने लर्न करिछि तार कोनोसी भी इफेक्ट नाही ए सिचुएशन सहित ए सिचुएशन लर्निंग ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली कोनोसी हिसाब रे से अफेक्ट करे नाही। हमें आराम से प्रत्येकटी सिचुएशन वाइज हमें हमर लर्निंग को अक्वायर करि थाउ। ओके नेक्स्ट द्वितीय नंबर क्वेश्चन एन इफेक्टिव टीचर शुड प्राइमरली जने इफेक्टिव टीचर हम कान कहबा डोमिनेट द क्लासरूम को डोमिनेट करिवे फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग गिव मैक्सिमम होमवर्क ना कंप्लीट द सिलेबस क्विकली कोटा हबा पिले। गुड आफ्टरनून मैम सेठी हेलानी मोर एथरा मते टिके गाइड करन टिके प्लीज निहाती बाबरे पूजा किछि कथा नाही एमते नाही कि मोर बीएड फर्स्ट चांस रे हबो मोर सिटी फर्स्ट चांस रे हबो आमे लक्ष लक्ष पिला अच्छे दुनिया रे कोटी कोटी छुआ अछंदी समस्त आमे स्ट्रगल करूछे आमे स्ट्रगल पीरियड रे अच्छे एमती ही नाही हमर गोटे थर रे समस्तंगर ही हेइ जिवो हबो सब जिंस ठीक हबो एते पैनिक हबा नाही। तो राइट आंसर होची कोन ऑप्शन बी फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके प्रणाम प्रभात। नेक्स्ट आसला कोन व्हिच अप्रोच इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड को अप्रोच ता होची मोस्ट लर्नर सेंटर लेक्चर मेथड डिटेक्शन मेथड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रोट मेमोराइजेशन। वेरी गुड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो थरे छुआ कौन करे ना लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे पाठटी को पढ़िया पई चेष्टा करी थाए लर्नर सेंटर मेथड प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करी लेक्चर मेथड हैला डिटेक्शन मेथड रोट मेमोराइजेशन ई सब जिंस कहा सहित संबंधित ना टीचर सेंटर लर्निंग सहित संबंधित। नेक्स्ट आसला कोन ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ए कांसेप्ट व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट। जने टीचर नोटिस करूछंदी किछि स्टूडेंट्स अछंदी जो माने अनेबल अछंदी कोन से कांसेप्ट को बुझिबा को ताले टीचर सेठी कोन करिवे पनिश देम इग्नोर देम आइडेंटिफाई देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव गिव देम मोर होमवर्क कोन हबो। ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ए कांसेप्ट व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट कोन करिबा दरकार।
आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज तांको डायग्नोज करिवे तांकर को एरिया रे प्रॉब्लम अछि द बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग इज fearful and strict competitive only democratic and supportive completely teacher control कोटा हबो सेशन टी भल लागुथिले तमे समस्त सेशन को लाइक कर दियो एंड सेशन को शेयर कर दियो सांग मानक सहित एवं चैनल ले जो माने न्यू अछंती बीएड क्लासेस देखुछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे फॉर ऑल अपकमिंग क्लासेस ओके obviously democratic and supportive classes आमे देखिबा देन आसला कोन ना टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टीचिंग ता केते बेले मोस्ट इफेक्टिव हेई परिबो द टीचर टॉक्स थ्रू आउट द क्लास जेते बेले टीचर थ्रू आउट द क्लास टॉक करिवे ना स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट जेते बेले स्टूडेंट्स माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे ना स्टूडेंट्स मेमोराइज द टेक्स्ट बुक ना जेते बेले स्टूडेंट माने टेक्स्ट बुक को मेमोराइज करिवे ना टीचर गिव्स फ्रीक्वेंट टेस्ट टीचर आमे कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को होचे तो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माध्यम रे कोन करबे टीचर खाली फ्रीक्वेंट टेस्ट दे चलथे टेस्ट दिया आज एई परीक्षा काली सही परीक्षा आज साहित्य परीक्षा काली गणित परीक्षा काली विज्ञान परीक्षा सब किछि दिया चलिथिबो वेरी गुड जेते बेले स्टूडेंट माने प्रत्येकटी जिंस रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे आमे ताकू ही कहि परिबा टीचिंग ता मोस्ट इफेक्टिव बोली नेक्स्ट आसला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी नोट्स आस्किंग स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई देयर आंसर आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेफिनेशन रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सरसाइज कोड आबो वेरी गुड किछि जण सी कहउछंती किछि जण बी कहउछंती ओके ताले ए आउ डी हबनी सी आउ बी हबो एया तो आस्किंग से पचला क्रिटिकल थिंकिंग माने तार ओडिया कोन चिंता एवं प्रत्याशामूलक प्रश्न ओके आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज डेफिनेशन मेमोराइज कहबो घोषिबाटा को होची क्रिटिकल थिंकिंग से तो मेमोराइज कला एठी तार थिंकिंग कथा आसला गोडू जहा थिला ए बी सी डी राम हरि सीता से मेमोराइज कला तो राइट आंसर कोन हबो जो माने ऑप्शन बी देइचा आस्किंग स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई देयर आंसर जदि एठी तुमे माने ऑप्शन बी कहूछ ताले मु जदि तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग ता जानिबा पई चाहूची मापिया पई चाहूची आज टीचर मते कोन करियार अछि मु तम कोइ अच्छा ठीक अछि तो एते कथा कहूछु ताले कहिलु कि तू जदि ऑप्शन बी दउछु ऑप्शन बी काहेंगे हबो काहेंगे ऑप्शन सी हबनी काहेंगे ऑप्शन डी हबनी तो छुआटा सेठी कहबो हां टीचर जदि डायरेक्ट मो ना धरि के पचारि दउछंती मते भाबिबा दरकार कि ए जिंसटा कोन काहेंगे हला मु जदि मो सांग बुद्धि रे पड़ी कहि दैछि भी ताले मु ऑब्वियसली भाबिया पई लागि नेक्स्ट आसला इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स मीन दैट लर्नर्स मानक भितरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन कोन ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम वे समस्त लर्नर सेम वे रे पढ़ंती ना ऑल लर्नर्स हैव द सेम एबिलिटीज ना लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड लर्निंग फेस ना ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली तो ऑप्शन सी होची लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड लर्निंग फेस देन आसला ए टीचर शुड डील विथ ए स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर्स बाय reducing the student ridiculing the students na ignoring the student helping the student identify the mistake na giving punishment कोड आवा पिले ना नंबर
helping the students to identify the mistake. Then asla the teacher's role in a constructivist classroom in mainly of that. तो गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे जने टीचर का रोल केमिति हबा दरकार, गोटे क्लासरूम सिचुएशन रे जने टीचर केमिति रहिबा दरकार. वेरी गुड. अच्छा मते एते सब आंसर कहूछ कुआ कंस्ट्रक्टिविज्म कथा किए कहछंदी फैसिलिटेटर तो ठीक अछि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किए कहछंदी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट केते जन का नाम कहलो केते जन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट का नेम कुह वेरी गुड जीन पियाजेट और वाइगोट्स्की हेबेनी जीन पियाजेट वाइगोट्स्की अस्बेल मीनिंगफुल लर्निंग ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग ओके बहुत बढ़िया जानी छो कौन 11 नंबर ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कंपेयर टू डिफरेंट सॉल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम एंड डिफाइन व्हिच सॉल्यूशन इज बेटर दिस प्राइमरली डेवलप्स मेमोराइजेशन क्रिटिकल थिंकिंग इमिटेशन रिप्रोडक्शन मु माडुआ लोक केतेबेले मोहन माझी आसुछंती केतेबेले अजणा लोक आसुछंती केतेबेले माडुआ लोक आसुछंती केतेबेले अमानिया बाघ आसुछंती जार जेतेबेले इच्छा होची मो क्लास को बुली आसुछंती माडुआ लोक कोन कहउछ माड खाइबो बट वर्चुअली तो माड देई हबनी यस ऑप्शन बी दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग ओके Next is la kauna na student consistently performs poorly despite attending classes regularly. The most appropriate first step for the teacher is to ताले teacher करा first step कौन रहिबो एठी तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी डायग्नोज द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी से क्लास अटेंड करूची बट कंसिस्टेंटली तार पुअर परफॉर्मेंस होची मम्बा अच्छा साइना यस निहाती भाबरे नेक्स्ट आसला कौन व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को को क्लासरूम प्रैक्टिस ता बेस्ट रिफ्लेक्ट करूची Student construct meaning through experience and discussions. Okay. Next gala a teacher changes the teaching strategy after observing that students are not understanding the concept. It demonstrate rigidity, reflective teaching, authoritarian teaching, na mechanical teaching. कौन हबा
अच्छा अच्छा अजना लोक नाटा भल लगे से लकी माड़ुआ लोक हो पलि आसले। तो राइट आंसर होची रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो टीचर कौन कले देखिले कि ना मु डेली बेसिस रे पढ़ाऊची बट स्टूडेंट मानकर इम्प्रूवमेंट हो पारुनी डेवलपमेंट हो पारुनी ताले इम्प्रूवमेंट बा डेवलपमेंट न हबार कारण कौन रीजन कौन सब फाउंड आउट करला परे ही से कौन कले ना तांग स्ट्रेटजी रे किबा मेथड रे चेंजेस आनिबे। Then asla which situation represent intrinsic motivation? A student studies to receive a prize. छुआटी प्राइज पाई पाठ पढुची ना स्टूडेंट स्टडीज टू अवॉइड पनिशमेंट पनिशमेंट रो भय रे कोन करूची अवॉइड करूची। तापरे कोन हैला ए स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज द एंजॉयज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। गोटे स्टूडेंट पढुची काई ना से टॉपिक को एंजॉय करूची। स्टूडेंट स्टडीज टू ऑब्टेन हायर मार्क्स ना से हायर मार्क्स पाई स्टडी करूची। Yes. 15 नंबर सी कौन ना स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज दे एंजॉयज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। आमर मोटिवेशन ने दुई प्रकार मोटिवेशन अच्छी जदि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आमे करबा कौन ना इंट्रिंसिक आउ एक्सट्रिंसिक। ओके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक गोटे हैला अंतः उद्दीपना आउ गोटे हैला कौन बाह्य उद्दीपना। तो सी पचारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा ना जोटा आमे निजे एंजॉय करूछे जोटा आमे आम खुशी पाई करूछे जोटा मु मोर ओन हैप्पीनेस पाई करूछी मोर निजर इनसाइट्स मते अभिप्रेरित करूछे जिनसडा करबा पाई दैट इज इंट्रिंसिक। तो एठी से कहला गोटे स्टूडेंट स्टडी करूछी बिकॉज ही एंजॉयज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। से धीरे धीरे टॉपिक को बुझी बुझी से जिनसडा को एंजॉय करूछी सो दैट से टॉपिक ता पढुची। तापर आसला एक्सट्रिंसिक बाह्य उद्दीपना आमे जोटा कहूचे माने कौन आमको जने लोभ प्रलोभन कौन से उपदेश हो कि कौन भी जिनस जमती कि तू एग्जाम भल कर दे तो गोटे मोबाइल फोन माने मते तो सेमती प्रलोभन बहुत मिले कहीं मते पाठ पढ़ा कहले मोर गोटे डायलॉग थाए तुम मानकर भी से फेमस डायलॉग थी मो कथा मु बुझीबिनी मते एते पाठ पढ़ कहले मते भल लागेनी एटा होची मो फेमस डायलॉग मु जानछि मु कौन करिवे तेणु मते प्रलोभन देखा हुए गोटे तते माने सुना कान फुल दियाब कि गोटे मोबाइल फोन दियाब गोटे स्मार्टफोन दियाब तते गोटे बड़ कॉलेज रे पाठ पढ़ाया को छाड़ा हब। मो छुआ बेले मु एमितिका प्रलोभन पाइछि +2 रे जदि टॉप करदेलु भल परसेंटेज आनलु तते गोटे भुवनेश्वर राजधानी रो गोटे भल कॉलेज रे पढ़ा हब। तू जदि 10th भल करदेलु गोटे मोबाइल फोन मिलबा एंड ए सब मिली मिली आसीछि दैट इज कोन ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। काई ना हम मानको भितरे एते इंट्रिंसिक मोटिवेशन नाही आम भीतर इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही नाही। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मते खाइबा पई मना कले भी सही जिंस रे मोर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसे। तुम मानक भितर सेमती समस्त किछि ना किछि जिंस रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसुथुबो मते खाइबा पई मना कले किंतु मोर सब प्रकार खाद्य जिंस रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसी जाए। किंतु एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोन जेमति कि एठी आसला प्राइज एठी हला पनिशमेंट गोटे मु पनिशमेंट रो भय रे मो बापा काले रागिबे मो बापा काले कोन कहिबे सेथि लागि मु कोन करूची ना मु पाठ पढुची। ए स्टूडेंट स्टडीज टू ऑब्टेन हायर मार्क्स मु हायर मार्क्स रखि देले मते समस्त बाबा करिवे मु टॉपर हेई गले मते एडे गोटे सिल्क कप मिलिबो भाई मोर से कॉलेज रे ना रहिबो जो अटेंशन सीकर जो आमे कहू कि मु अटेंशन पाइबा पई से कामटा करूची से सब जिंस होची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आउ एमते भी थाए एमते नुह कि जो आमर गोटे जिनसटे किछि भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नाही समस्तक भितरे किछि किछि अलग अलग इंट्रिंसिक मोटिवेशन अछि। टीचर को क्लास टाइम पचारले भी कहंती नाही। तो सही भली हिसाब रे तो लाइफ रे दुई प्रकार मोटिवेशन अछि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देन आसिला कोन ड्यूरिंग ग्रुप वर्क वन स्टूडेंट्स डोमिनेट व्हाइल टीचर्स रिमेन साइलेंट द टीचर शुड जेते बेले ग्रुप वर्क चली थाए सेते बेले गोटे स्टूडेंट डोमिनेट करि थाए अदर स्टूडेंट मानु साइलेंट रहबा पई टीचर कोन करबा दरकार स्टॉप ग्रुप वर्क परमानेंटली अलाउ द डोमिनेंट स्टूडेंट टू लीड एवरीथिंग structure role so that all students participate na punish the dominant students। very good
एक्सीलेंट। तो स्ट्रक्चर रोल्स दैट ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट आमे जदि ग्रुप वर्क भी करूछे तो आमे प्रत्येकटी ग्रुप वर्क एमिति स्ट्रक्चर वे रे करिथिबा सो दैट कोन सब स्टूडेंट अकाउंटेबल रहिबे सब स्टूडेंट निज काम पई रेस्पोंसिबल रहिबे एवं समस्ते मिली मिसी की कार्यटी को संपूर्ण करिवे। नेक्स्ट आंसर a teacher use questions such as what evidence supports your conclusion. This question mainly promotes recall, critical reasoning, recognition, memorization. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऑप्शन बी क्रिटिकल रीजनिंग मीन्स कौन तुम्हें डिफेंड करूछ, तुम्हें रिजन करूछ, तुम्हें लॉजिक यूटिलाइज करूछ सपोर्ट करबा पई तुमरो स्टेटमेंट को कि तमे जो स्टेटमेंट बा जो एविडेंस ता देइछ ताकू तुम्हें केमिति डिफेंड करबो को जिंसटा ही ताकू सपोर्ट करूछि बोलिका। ओके, नेक्स्ट आसला कौन 18 नंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज individual differences ପାଇଁ most appropriate response कौन use exactly the same method for every learner, provide differentiated learning opportunity, teach only average learners, ना separate weak learners permanently। अठारह नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रोवाइड differentiated instruction learning opportunities। 19 number a teacher gives feedback immediately after a student's performance so that the student can improve the next performance. This is an example of formative assessment, summative assessment, placement assessment, norm reference assessment. काली समस्त को असेसमेंट रो टाइप्स पढ़ाई थिली, आशा करूची आज समस्त यार करेक्ट आंसर देई पारिबो, काहार भी असेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हबो नाही। काली हमें डिटेल्स रे समस्त प्रकार टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी थिले क्लास रे। जो माने जदि काली रो क्लास को स्किप कर देछ ताले निश्चित भाव में काली रो क्लास को टिके देखि नबो। राइट आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट आसला 20 नंबर व्हिच टीचर बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम। टीचर मेक्स ऑल डिसीजन, ना student participate in establishing classroom rule, ना students remain silent during lessons, ना teacher uses punishment to maintain discipline। Student participate in establishing classroom rules। Next asla which level of teaching is primarily concerned with memorization and recall of facts। को level teaching टा basically related थाए कौन which level of teaching is primarily concerned with memorization? V understanding level and recall of facts। तो memory level माने रखी था। reflection किए दौ चरे memorization देइची क्वेश्चन ने तुमको आंसर देइची किंतु तमे कहउछ मो अजा आंसर देइची आई तमे किंतु कहबो ना ना मो आई को भल पानी मो अजा को बेसी भल पाउची कहिना मो अजा मते कुरकुरी बिस्कुट किणी खाए दोची सेमिति से मेमोरी लेवल हेई थाउ मु पॉजिटिव आडे जिबी आ मु नेगेटिव काहेंगे जिबी मु पॉजिटिव आडे जाके रिफ्लेक्टिव लेवल मारिबी नो कि तो सेई भली भाबरे टीचिंग प्राइमरीली हमर तीनटा लेवल रही छै मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सेही हिसाब रे हमर मेमोरी लेवल हैला मेमोरी लेवल किए दै छथि हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन, देन रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट। तीनटा लेवल अछि तो मेमोराइज करबा प्रोसेस को गुड आफ्टरनून सुरभि तो याको कुआ जाउछि कोन ना मेमोरी लेवल। नेक्स्ट आसला कोन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड मेनली विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, इंडिपेंडेंट रिसर्च। हां मोना मोर क्लास टाइमिंग सब बेले एवरीडे 12 pm मोर क्लास टाइमिंग। ओके
recall and recognition. Next asila कौन ना which level of teaching emphasizes understanding relationship, principle and concept. Memory level, understanding level, reflective level, autonomous level. Very good, understanding level. Next asla the reflective level of teaching is best characterized by critical thinking and problem solving. Okay. Okay. Ajira last question, which level is considered the highest level of teaching in Morris and Bigge classification? Okay, एटा तुम मानक पई समस्त को टैक्स रहिला लास्ट क्वेश्चन आंसर दबो एंड जो माने चाहूछ कि मटेरियल क्लास रिलेटेड अपडेट किंबा मो सहित कांटेक्ट करिया पई किछि भी क्वेरी अछि तुम माने इथरे जॉइन हे परबा हमर टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 याको स्कैन करि दबो किंबा टेलीग्राम रे नॉर्मल जे के नेम टाको सर्च कर दबो सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 तुम माने चैनल लिंक को पाई जिवो ओके तापरे आसिला कोन तुम मनकर बहुत जनकर प्रिपरेशन क्वेरी रहउची हम प्रिपरेशन कोन करबो केमती करबो ये होची ऑफिशियल नंबर ए नंबर रे कॉल करके तमे डिटेल्स बुझी पारिबो ता सहित तुमरा द्रोण 3.0 आज होची केते 25 ना तुमरा 29 तारिख रु स्टार्ट हेबा को जाउची 29 अगस्त रु द्रोण 3.0 ओडिसा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 जो माने इंटरेस्टेड अछ हम सहित मिसी की बैच रे एनरोल करि परिबो मु थरे देखै दउची तुमे माने केमिति एनरोल करबो सर्वप्रथमे पिलाए तुमको आडा 24/7 ऐप टी को लॉगिन करिवार अछि प्ले स्टोर रु आडा 24/7 डाउनलोड करिवार अछि लॉगिन करबो निजर नंबर देकी निजर नंबर दे साला पर जतरा ऐप ओपन करूछ एमिति गवर्नमेंट जॉब आसीबो तो गवर्नमेंट जॉब ऊपर क्लिक कले हमर कोन आसीबो स्टेट एग्जाम रे हमको फर्स्ट स्टेट चूज करिवार अछि ओडिसा चूज कर देला पर एठी तुमको डायरेक्ट ओडिसा बीएड बोली आसुची देखो एमते इंटरफेस आसी गला द्रोण 3.0 जार प्राइस रहउची तमे देखि पारुथबो केते द्रोण 3.0 सेटा तमरो प्राइसेस रहउची तुमरो 2200 समथिंग तो ताकू तुमे कूपन कोड यूज करि परिबो कोन ना कूपन कोड यूज करबो YT46 यूज करबा द्वारा 2100 पैसा केते नउची मैडम पार्वती 2165 टंका कूपन कोड यूज करबा YT46 कूपन कोड यूज करे एहा तमको 2165 टंका हे जिवो ठीक अछि थैंक यू एवरीवन जदि किछि क्वेरी अछि कमेंट सेक्शन नियाति भाबरे पचारबो किंबा पेमेंट केते अछि मैम पूजा पेमेंट होछि 2165 कूपन कोड आ कॉइन मोबाइल यूज करबा पारे ओके थैंक यू सो मच जदि किछि क्वेरी अछि मो सहित मध्ये कांटेक्ट करि परिबो।